Good morning, dear students. My name is Ritesh, and welcome back to my channel, The Achievers Education. Today, we are going to talk about the topic the Great Economic Depression and Simon Commission, and also the Salt Satyagraha. So, let us begin with this topic. Now, as the non-cooperation movement came to an end, now Gandhiji had to take some decisions. Okay, at the same time, several leaders like Motilal Nehru, C.R. Das also had to take some decisions. These were the prominent leaders and they were the big leaders. So now let us see what all what all decisions were taken by them, and what was the feeling of different Congress leaders also after non-cooperation movement came to an end. Let us see. First thing, several Congress leaders were now about to give up from the non-cooperation movement after doing mass struggles. See, what was happening was, now non-cooperation movement was of course quite a successful movement. It was spread in most of the parts of the country and it was very nice. But many of the leaders were now actually fed up by going on with the non-cooperation movement, because it created lots of violence actually. Okay, so next thing what happened was, the leaders now they wanted to take part in the provincial council elections, which was made under the Government of India Act 1919. So Government of India Act 1919 was there, in which their regular elections shall be held, parliament will be made, and all those things were there. Okay, the proper legal procedure of election was always there. Okay, so it now this Congress leaders who were there, they were feeling that it's time for us to now go into the elections and take part inside the elections and come into the power. So that was their belief. I'll be reading the third point also, saying that they believed that by entering into politics they will be able to oppose British Council and bring reforms. They were feeling like this, that by entering into the politics they will be coming into the power and they can bring reforms. उनको ऐसा लगता था कि हम अगर पॉलिटिक्स में जाते हैं तो हमको पावर मिलेगी और उसके बाद में हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं और उस प्रकार से हम हमारे देश के लिए लड़ सकते हैं. क्योंकि हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करके तो देख लिया, इसमें हमने जब सरकार के साथ में सहकार्य नहीं किया तो बहुत सारा वायलेंस तो हुआ. हाँ, भले बहुत सारे चेंजेस जरूर आए, अवेयरनेस बहुत बढ़ी, बट देन वायलेंस बहुत हुआ, बहुत सारे लोगों की जाने गई और कई लोगों को मारा भी गया. सो दैट वाज द थिंग. नेक्स्ट पॉइंट, then C.R. Das and Motilal Nehru made a Swaraj party and entered into the politics. So as you can see in the picture, this is C.R. Das and down you know it very well, that is Motilal Nehru. These two people, they prepared a party called as Swaraj party and they started entering into the politics for bringing some reforms. Next thing. Now there are two things which are going to be which you have to be keeping in mind for this particular chapter. That is, first important thing which changed the entire Indian politics. Okay, so let us see. First thing, worldwide great economic depression, and second was Simon Commission. Now how these two events are really important regarding Indian political system. So let us see what happened when Great Depression came and what were the after effects also of that. So first thing was, worldwide great economic depression was going on. Okay, see, because like what is the meaning of economic depression, where there is the prices of the goods are falling down, there is not enough of money inside the economy, country के अंदर में पैसा नहीं होता है. Okay, to such situations we say that there is economic depression. Understood? या फिर जब चीज़ों के रेट्स जो है गिर जाते हैं, ओके, और जब चीज़ों की वैल्यू नहीं रहती है, तो ऐसे समय में हम बोलते हैं देयर इज अ इकोनॉमिक डिप्रेशन. सो दैट सेम काइंड ऑफ सिचुएशन केम एट दैट टाइम. सो लेट अस रीड विद दैट आल्सो. एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगेन टू फॉल इन 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930. सो एग्रीकल्चर के जो प्राइसेस थे, ओके, वीट, गेहूँ, चावल, ये सब धान्य के जो प्राइसेस थे वो गिरने लगी. 1926 में गिरने लगी और 1930 तक तो बहुत बुरा हाल हो गया था. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड एंड एक्सपोर्ट नाउ डिक्लाइन. सो लोगों की अभी डिमांड जो थी एग्रीकल्चर गुड्स की वो कम होने लगी, और एक्सपोर्ट भी जो था खुद के देश से बाहर बेचना सामान वो भी बहुत कम हो गया था. दैट वाज आल्सो डिक्लाइन टू अ ग्रेट एक्सटेंट. फार्मर आल्सो फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे द रेवेन्यू. जो भी किसान लोग थे उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो गया था कि अपना जो सामान उन्होंने, अपना जो प्रोड्यूस जो उन्होंने बनाया है उसको कैसे सेल करे और कैसे वो अपना खर्चा निकाले. Fourth point, people of the villages were in tension until 19
1930 और बहुत सारे लोग काफी चिंतित थे 1930 तक. Okay, so let us see now what happened afterwards. Now, when this all things was going on, Simon Commission came into existence. When this all things was going on, जब ये सब तकलीफें चल रही थी, so एक और अच्छी चीज तो नहीं बोल सकते इसे, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई तो वो था साइमन कमीशन, जिसके कारण लोग फिर से यूनाइट होने लगे. So let us see what is the meaning of Simon Commission. So, Britain government made a commission whose head was Sir John Simon and therefore the name was given Simon Commission. As you can see in the picture, ये जो महाशय है इनका नाम है Simon, Sir John Simon. As I hope you are able to see it in the picture, or let me just move my screen over here. Okay. Yes, I hope you are able to see it right now here. So this person was Sir John Simon. Britain government made a commission whose head was Sir John Simon and therefore the name was given Simon Commission. Now before understanding Simon Commission, we need to understand what is the meaning of commission. So let us see. A group of official people who has the authority to find out something or inspect something. ये commission जो होता है दरअसल 4-5 लोगों की body होती है. Alright. Okay. कुछ लोगों की body होती है जिनको हम लोग responsibility देते हैं कि आप जाके तहकीकात करें, आप जाके डिटेक्ट करें कि क्या प्रॉब्लम्स है किसी चीज के अंदर में. ओके, सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज कमीशन. सो एंड बिकॉज इट वाज हेडेड बाय साइमन, दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड एज साइमन कमीशन. So let us see. So Simon Commission was given the responsibility to go to India and find out constitutional functions of India and suggest some changes. Okay. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको इंडिया में इसलिए भेजा था ताकि जाके यहाँ की फंक्शनलिटी क्या है, यहाँ पे लोग कैसे किस प्रकार से काम कर रहे हैं, या फिर जो यहाँ पे करंट गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश की वो कैसे काम कर रही है, क्या रूल्स लगाया है इन लोगों ने और किस कारण इकोनॉमिक डिप्रेशन आया है. ओके, क्यों इतने प्राइसेस कम हो रहे हैं, ये सब चीज़ों की तहकीकात करने के लिए साइमन को भेजा था. But there was one problem in the commission and that was the commission had no Indian member in that. Okay, ये जब कमीशन उन लोगों ने बनाया था उसमें उन्होंने एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिश सदस्य थे, which was the only reason then so many people boycotted Simon Commission. So as you can see, when Simon Commission came to India in 1928, people protested against it by saying Simon go back, Simon गो बैक. सो काफी लोगों ने उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया और उसको वापस जाने के लिए बोला, ये कमीशन यहाँ पे लागू नहीं होगा, ऐसा उन्होंने दिखाया. सो टू रिप्रेस द अपोजिशन फ्रॉम द पीपल. अभी देखिए इस चीज को, ये आंदोलन को दबाने के लिए फिर लोगों ने फिर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया. सो टू रिप्रेस दिस अपोजिशन फ्रॉम द पीपल, लॉर्ड अर्विन proposed and offered fancy policies to the Congress leaders so that the nationalist movement should be stopped. So ये जो Lord Irwin है, okay, you can see it there, okay, उन्होंने काफी सारे ऑफर्स प्रोवाइड करे कांग्रेस लीडर्स को, ये बोल के कि मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको वो दूंगा, आपको जल्दी आज़ादी मिल जाएगी एंड सो ऑन. ऐसे प्रकार के छोटे और फैंसी और झूठे ऑफर्स दिए ताकि वो लोग ये नेशनलिस्ट मूवमेंट छेड़ना बंद कर दे. बट देन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. कांग्रेस लीडर्स जो है वो इतने छोटे ऑफर्स पे वो लोग प्रे नहीं बने. ओके, इनफैक्ट उन्होंने काफी अच्छा डिसीजन लिया. सो लेट अस सी व्हाट वाज दैट. बट कांग्रेस लीडर्स डिड नॉट फॉल प्रे टू सच फैंसी ऑफर्स एंड डिमांडेड फॉर पूर्ण स्वराज. ओके, उन्होंने ये ऑफर्स को ठुकरा दिया और उन्होंने इनफैक्ट उन्हें खुद की डिमांड रख दी कि अभी हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए हमें, ऐसा उन्होंने डिमांड रखा. Now, under the presidency of Jawaharlal Nehru, okay, जवाहरलाल नेहरू जी के प्रेसिडेंसी में जब वो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, इन लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929, ये डेट जरूर याद रखना, डेफिनेटली मैथ क्वेश्चन आ सकता है कि लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस कौन से ईयर में हुआ था या फिर कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 कहाँ पर हुआ था, ऐसे भी पूछ सकते हैं. सो आप यू हैव टू से लाहौर. So Lahore session of Congress 1929, they demanded for Purna Swaraj, and on 26th of Jan 1930, Independence Day was celebrated, where all the people pledged for the full independence, but they did not got much attention from the people. 26 जनवरी 1930 को उन्होंने ये इंडिपेंडेंस डे बोल के सेलिब्रेट तो किया था, पूर्ण स्वराज ऐसा दिन करके सेलिब्रेट तो किया था, बट देन बाकी लोगों का उनको उतना समर्थन नहीं मिला. बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उनको इस चीज के लिए उतना समर्थन नहीं मिला, लोगों का उतना जमावड़ा नहीं था. So that was not much there was not much of
support was there to this thing. So let us see then what happened. Now, when Gandhiji saw that these things are not working, जब गांधी जी ने देखा कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारा हो गया, ये कुछ चीजें उतनी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे, तो गांधी जी ने एक प्रपोजल भेजा लॉर्ड अर्विन को. गांधी जी ने एक प्रपोजल भेजा, उसमें उन्होंने कुछ 11 डिमांड्स रखी. ही केप्ट 11 डिमांड्स. ही रोट अ लेटर टू लॉर्ड Irwin and he put some 11 demands. All right. So let us read these points. Gandhiji on 1930 he sent a letter to Lord Irwin in which he mentioned 11 demands, out of which one of the most important demand was abolition of salt tax. वो समय पे अगर आप देखा जाए तो वहाँ पे लोग सॉल्ट के ऊपर भी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट के ऊपर तक के टैक्स लगा दिया था. अभी ये सॉल्ट एक ऐसी कमोडिटी थी जो गरीब भी इस्तेमाल करता था और एक रिच इंसान भी इस्तेमाल करता था. ओके, सो दिस वाज समथिंग लाइक दैट. So salt was a very common good which was consumed by poor as well as rich. This demand was very small, but it had played a very vital role in Indian freedom struggle. ये डिमांड जो थी ये बहुत छोटी सी डिमांड थी, मगर ये हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में इस छोटी सी डिमांड ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा. बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने में इतनी मदद हुई ये छोटे से आंदोलन के कारण, जो आगे चल के बहुत बड़ा आंदोलन हुआ. So let us now see. Gandhiji in his letter has sent Lord Irwin an ultimatum. Ultimatum का मतलब proposal होता है, which mentioned that if all the demands are not fulfilled by the British government, then Indians will launch civil disobedience movement. Okay, what did he mean to say by this thing? That he said that by so and so period of time, if you do not follow our demands, or if you do not fulfill our demands, we will launch civil disobedience movement. So as usual, demands were not accepted and civil disobedience movement, under which the famous Salt March began. Okay, all of that started. So we'll be stopping my today's video till here only. The next part is a little bit bigger, so that I'll be discussing in the next part. All right, so that will be part 7a. It will be all right. So thank you so much for watching this video till here. I hope you all are studying well. Do comment and let me know how the videos are. Is it explainable to you all and आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? Do let me know all of these things. Thank you so much for watching my video. This is Ritesh Chandekar signing off until we meet next again. Thank you so much and have a good time.